वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, मच अपलोडेड, मच कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स ने बनाई है। उसमें इतने ज़्यादा एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है कि एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, या फिर ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी को लेने के लिए, समझने के लिए, या फिर आश्रम्स के बारे में एक आई थिंक अलग ही परसेप्शन बन गया था। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में बिकॉज आई वांट टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस। व्हाट डू यू थिंक वाज हिज इंटेंट? वाज ही द राइट पर्सन जिसे एक स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंस दिखता था हर किसी के अंदर, और वॉज ही ट्राइंग टू इनकलकेट दैट स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंस कि हर कोई समझता है इसे, लेकिन कोई भी इसे जेन्युइनली या फिर उसको बिलीफ नहीं है इस बारे में। सो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री बेसिकली ओशो रजनीश के उनके बारे में एंड उनके आश्रम ओरेगन एंड पुणे के बारे में है। सो यस, आई हैव सीन इट। कंट्रोवर्शियल है वो काफ़ी, बट I think you specifically asked about his intent, right? कि Yeah. whether he saw spiritual competence in everyone's. I would just ask you and कुछ heavy answer नहीं सोचना है। Simple सी चीज़ बताना। You have lived on the planet for 24-25 years, I guess. And काफ़ी ups and downs देख लिए होंगे। बहुत बारी बहुत हिंदी इंग्लिश पंजाबी में गालियाँ दे ली होंगी बुरी situations को, अच्छे होंगे। And now someday, let's say you were following something and you hit a peak of bliss into a extent कि आपको पता चलता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, एंड आपको कहीं पे ऐसे हिट मारा कि मेरा एक बैंक अकाउंट है उसमें 10,000 करोड़ पड़ा हुआ है, एंड आपको पता लगता है कि मैं तो यूज़ कर ही सकता हूँ, सारे कर सकते हैं, मेरा कम नहीं होगा, सबके लिए डेली खर्चने को इतना है। I'll tie up this example why I'm pinpointing it in this way. तो ये 10,000 करोड़ आपको मिल जाए, आप घर वापस जाओ, अपने भाई को, मम्मी पापा को, किसी को परेशान हो तो देखो यार 100 रुपये लग गए, यहाँ ये साला शेयर गिर गया, यहाँ कुछ हो गया, विल यू, व्हाट वुड बी योर इंटेंट? विल यू नॉट टेल देम अबाउट इट? हाँ, ऑफ कोर्स। पहली चीज शायद आपको लगे कि यार क्या 10,000 करोड़ पड़े हैं, क्या छोटी मोटी बातों के पीछे। और दूसरी चीज, यू माइट इवन गेट अ लिटिल सैड, रीजन बीइंग कि फर्स्ट चीज आप उनको बताओ कि पापा ये बातें छोड़ो, नौकरी वोकरी छोड़ो, 10,000 करोड़ पड़े हैं अपने पास, व्हाट विल 90% ऑफ द वर्ल्ड से? विल दे बिलीव यू इन एनी? नहीं, नो नहीं, हाफ ऑफ देम विल से प्रोबेबली कुछ जॉइंट फूक क्या है, ड्रिंक कर क्या है, it's about nirvana. So the thing is कि what going by now, whether I believe it or not is a separate story, whether I have experienced it or not is a separate story. The reason for giving this example is that while every master has given this reason कि what they hit is there for everyone, what they essentially explain is कि human life is the only species for which potentially this blissed out, this samadhi state and all this exist. What his intent was, every master's intent has been to provide it to everyone. Reason being, this said that at a core level, at a very subtle level, like even in fact the Albert Einstein's equation for creation E is equal to mc square states that there is only one energy that is manifesting or projecting itself as different creation, and scientists have reached to a conclusion that there is only one energy that's just reverberating at different pitches in entire creation, and different forms are taken up. So what these masters explain is that once you hit that samadhi state or your self-realization or whatever it is at the subtlest form, it's that state where you cannot distinguish between me and you. So right now, if I have that 10,000 crore rupees to spend and I'm struggling for petty expenses or day-to-day life struggle, it is not that whether I want to share it with you or not. It's like once you do you think about taking care of your hand, you never do. It's just a part of you. So once you experience entire creation as a part of you, you definitely want to give that to everyone. Like if I see my brother struggling with a headache and I'm here blissed out in a samadhi state, how they explain it, to a million times a better state of living in this way, I will definitely feel sad. One, because I cannot in words simply tell him, and second, I cannot give him that experience by words. So every master tried to give their best, but one thing why it is controversial is I think the world was not ready for him. I think Osho was much ahead of his time. Probably he tried his best
there are many followers. I'm sure there are many Still followers many till followers, date yeah. who love him, and I read. It's been almost 10-11 months that I sleep 1 hour listening to his lectures. Almost 10-11 months, and every day, I'm not kidding, every day. So I like him too, but I think, yeah, it's controversial because he was much ahead of his time, and every master's his interest has been to give it to as many people as